guys, so you have your science exam tomorrow, and क्योंकि कल तुम्हारा science exam है, you guys are very scared. You feel like you're forgetting everything. Now when you're opening the book and you're trying to remember and trying to revise, you can't recall anything because you feel like I don't remember anything. Have I forgotten anything? How should I revise? These are your thoughts right now because obviously कल तुम्हारा science का पेपर है. इसके पहले तुम्हारा English का हो तो गया था, but English is easy as you all know. But tomorrow is science. Self-doubt is pouring in from all the ways. You feel less confident, you're scared for the exam. How bad can the exam go? Is it going to be very tough? I don't know what is happening, I'm very scared. Please tell me what to do. Listen to me, okay? कल तुम्हारा एग्जाम है, बहुत टेंशन का माहौल हो रखा है, ठीक है? हर जगह से वीडियोस आ रही हैं, सब हो रहा है. So, why do you feel like you're forgetting everything? You are actually not forgetting anything. This is your brain playing tricks on you. This happens just the day before the exam. जब तुम अपना बुक खोलते हो, when you open your book and you try to study, you don't remember anything. That is because तुम साइंस के स्टूडेंट्स हो, कल तुम्हारा साइंस का पेपर है. I'm going to explain it to you scientifically. So you are in flight or fight mode. Which hormone is responsible? If you told adrenaline, you are correct. So तुम उस टेंशन में हो, you are in the stress and your body has gone into flight or fight mode. And sympathetic nervous system is overloaded. It's shooting in your system right now. And adrenaline is all over your body, and even cortisol. If you know cortisol, that's great. Cortisol and adrenaline, these two hormones are responsible for what is happening right now. And जो तुम्हारा prefrontal cortex है of your brain that is responsible for your logical reasoning, your thinking and your recall, that is affected by these hormones, so you feel blank. But in actuality, you are not blank, you are just under stress. So how do you overcome stress? I will tell you how to stimulate your parasympathetic nervous system so you can combat this stress. The first thing is to calm yourself. टेल योर सेल्फ कि मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, मैंने इन 4 दिनों में गैप टेस्ट में भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, उसके पहले भी मैंने ठीक से पढ़ाई की है. आई हैव एक्चुअली स्टडीड एवरीथिंग, आई हैव डन एवरीथिंग दैट यू टोल्ड मी टू डू. आई हैव डन द फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, आई हैव सॉल्व्ड many questions. I remember all the chemical equations, I've learned all the biological diagrams, I've done self-study, I've watched marathon videos. You actually know everything. So trust in your preparation, trust in the amount of work you put in, and trust in your studies. ठीक है, तुमने खुद से पढ़ाई की है, तुमने वीडियोस भी देखे हैं, you've done everything that you can do. You are sought for the exam. Don't be scared. So this is how to calm your stress. You can do this the day before your exam, you can do this on the day of your exam, you can do this अगर तुम पेपर देख के भी स्ट्रेस आने लगा. So do this simple exercise. It will make sure that stress is far away from you and your brain is activated and you're ready to write all the answers. I'm going to give you 2 techniques to calm down your stress, okay? Number 1, the breathing technique. Deep and slow breathing. Inhale for 4 seconds, hold for 4 seconds, exhale for 4 seconds, and hold for 4 seconds. You can do this 3 to 4 times and you will automatically see that your stress has fallen down. Another technique that I also follow is the 5 4 3 2 1 technique. It's a grounding technique that's been used a lot. So wherever you're sitting, observe on 5 things that you can see. So 5 things you can see. For example, I can see my tab, I can see my light lamp, I can see my mic, I can see my clock, I can see my painting, I can see the clock behind. So 5 things you can see. 4 things you can feel. So I can feel the hair on my neck, I can feel the clothes on my body, I can feel this lip balm, I can feel my phone right now, okay? So focus on these 4 things. Next, 3 things that you can hear. I can hear myself right now, I can hear the dishes in the kitchen right now, and I can hear the birds chirping outside right now. So whatever 3 things that you can hear. 2 things you smell. 2 things that you can smell. You can smell your shampoo, I can smell my shampoo, okay? Or if I can smell my perfume, whatever you can smell. If you're sitting in an exam, scent of the paper or whatever. 2 things that you can smell and 1 thing that you can taste. Exam hall, you won't have anything to eat, so drink a sip of water. So this is a 5 4 3 2 1 technique that you can follow, and ये तुम्हारा स्ट्रेस पक्का रिड्यूस करेगा. और अगर तुम्हारा स्ट्रेस रिड्यूस हो गया, तुम एग्जाम फोड़ के आओगे, ठीक है? तो स्ट्रेस कम करो. और स्ट्रेस कैसे कम होगा? Do these 2 techniques that I told you. बिलीव इन योर प्रिपरेशन, दैट इज द बिगेस्ट थिंग. बिलीव इन योर प्रिपरेशन. चाहे तुमने बहुत अच्छी प्रिपरेशन तुम्हें लग रहा है कि तुमने नहीं की है, तो भी बिलीव इन योर प्रिपरेशन, क्योंकि इट इज़ मोर देन इनफ टू गेट 90+ इन योर साइंस एग्जाम. इस पोजीशन में रह चुकी हूँ. जब मैं अपना एग्जाम देने गई थी साइंस का, मुझे बिल्कुल ही लगा था कि मेरे नंबर आएंगे. भाई मैं तो 60 70 भी 70 दैट यूर थिंकिंग इज नॉट योर एक्चुअल स्कोर, दैट इज योर ब्रेन प्लेइंग ट्रिक्स ऑन यू कि कम एक्सपेक्ट करो, बट तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे. अनदर थिंग यू कैन डू, लिसन टू म्यूजिक, ओके? बैड एज सॉन्ग सुनो भाई, एकदम हाई एनर्जी सॉन्ग्स, not the low energy sad breakup songs. That is not what you need to do right now.
high energy songs, whatever it is. I hear Jerusalem bells are ringing. Whatever you can listen to, whatever gives you energy. कोई भी गाना तुम सुनो, अच्छे अच्छे गाने सुनो. Imagine yourself to be the best out there. Imagine yourself to be the best and the best and the best. And lastly, if you're watching this the day before the exam, then I'm going to tell you a very quick tip for revision. रिविजन सेल्फ स्टडी करो, ठीक है. नाउ डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ एनी बुक. एनसीईआरटी, you don't have to study. What you can do is just you can flip through the pages, just टक 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 3-4 seconds on one page. ठीक है, देख लिया यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, एंड मूव ऑन. एंड यू नो वट एवर यू डूइंग, मेक श्योर यू सेल्फ स्टडी 2 to 3 hours. उसके बाद अगर तुम्हें कोई मैराथन वीडियो देखना भी है तो यू कैन वॉच इट, बट यू हैव टू गिव योर सेल्फ 2 to 3 hours विद द बुक के साथ बैठो, है ना. पढ़ाई का मन नहीं करा, कोई बात नहीं, पढ़ाई मत करो. जस्ट ड्रॉ डायग्राम्स, है ना. व्हाइट बोर्ड में खींच दो बैठ के, न्यूरॉन का डायग्राम बना दो, हार्ट का बना दो, बायोलॉजी के डायग्राम से प्रैक्टिस कर लो ऐसे ही. जस्ट व्हाटएवर, टक 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 टक, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, ऐसे वैसे पैसे पैसे सब ऐसे कर लो. ओके. ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम अगर तुम्हें स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, आई होप तुम्हें ना आए. अगर आ रहा है, अगर तुम्हारे दिमाग में मैं आ रही हूँ, तो जस्ट इमेजिन मी टेलिंग यू, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस. डोंट गेट स्कैर्ड, गिव योरसेल्फ सम टाइम, टेक अ 10-second ब्रेक, डीप ब्रीदिंग करो और आंसर लिखने स्टार्ट करो. तुम्हें सारे आंसर याद आ जाएंगे. यू विल डू वेल, यू विल डू वेल, यू विल डू वेल. बिग सिस्टर एनर्जी टू ऑल ऑफ यू. Be happy, be confident, be grateful that you've gotten this opportunity to give the exam tomorrow. I know you will ace it. Come back to me on this video and tell me कि अच्छा गया, जैसा भी गया. I'm here for all of you. All the best. जितना कम इंटरनेट देखोगे उतना बेहतर. Use internet to your advantage, not the other way around. All the best. You will do well.